Hello friends, welcome to our YouTube channel SK Nursing Study. So friends, this is my first video. I hope that you will like my video, and if you will like, please share as well as subscribe my channel. So before starting, I would like to say that जो मेरा लेक्चर्स होंगे वो बोथ इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश में होंगे सो दैट एवरी स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट्स हैं जहाँ पर भी हैं वो इजीली मेरी लेक्चर्स को अंडरस्टैंड कर सकें. सो आई विल होप दैट यू ऑल विल अंडरस्टैंड because this study material is wholly for nursing courses, that is GNM, BSc courses, MSc, post basic. So all students can be benefited with this videos. So let's start with first unit, that is concept of child health under BSc third year course as well as for post basic course. Unit number 1, concept of child health. So let's start with this. So, SK Nursing Study. So first of all, I will discuss with you the concept of child health. So in my today's lecture, I will discuss with you the concept of child health. So first of all, I will discuss the term pediatrics. The term pediatrics is derived from the Greek word pedia and itric and x. So what does pedia means, what does itric means, what does x means? So बच्चे pedia का मतलब क्या है? Pedia means child, because we are going to discuss about children only. So pedia means child and itric means treatment. जब हम बच्चों का डिजीज़ कंडीशन के लिए, कोई भी डिजीज़ कंडीशन हो तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है उसके रिगार्डिंग. सो आइट्रिक, सो दैट इज एक्स एज व्हाट? It's a branch of science. It is a branch of science. So thus pediatric means what? Pediatrics means the science of child care. ठीक है, so it's a science of child care. Child care and scientific treatment. So here what kind of treatment? हमने कौन सी treatment provide करनी है? Scientific treatment we have to provide. And किसके regarding हमने scientific treatment provide करनी है? Related to childhood diseases. Childhood diseases. So अब अगर मैं बात करूं कि what is the definition, so my next concept is what is the definition of pediatrics. Definition क्या होगी? So it is the branch of medical science that deals with the care of children from conception to adolescence in health and illness. Clear बच्चे? So it is the branch of medical science. It is the branch of medical science. और अब किस चीज़ के लिए ये जो साइंस है, ये कि ब्रांच जो है ये किस चीज़ के लिए डील कर रही है? विद द फॉर द केयर ऑफ चिल्ड्रन. एंड when actually it starts from
जब कंसेप्शन होगा से लेके एडोलसेंस तक, एंड इट इज रिलेटेड टू health and illness. And there is one more definition because we are discussing the concept. So there is one more definition. It is the branch of science dealing with health of infants, children and adolescent to their growth and development and during their ability to achieve full potential is an adult. Right? So this is the branch of science again, which deals with the health of infant, children and adolescent. अब देखो मैंने पहले आपको क्या बताया था, इनमें फर्स्ट डेफिनेशन ऑल्सो मैंने कंसेप्शन से लेके एडोलसेंस तक बताया था, तो यहाँ पे भी इन्फेंसी स्टेज से लेके, इन्फेंट से लेके, चिल्ड्रन से लेके एडोलसेंट तक हमने क्या असेस करनी है, हेल्थ to their growth and development so that they can have the ability to achieve their full potential in an adult stage. ठीक है, so that कि वो अपना हेल्दी वेल्दी होकर हेल्थ उनकी अच्छी रहे, सो वो एक अच्छे अडल्ट बन सके. ठीक है, सो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि अ चाइल्ड इज़ अ यूनिक इंडिविजुअल. अ चाइल्ड इज़ यूनिक इंडिविजुअल. ही और शी इज़ नॉट अ मिनिएचर अडल्ट, not a little man or women. So the childhood period is very, very important. It is very vital because of socialization process by the transmission of attitude, customs and behavior through the influence of the family and community. ठीक है, so that is why हम इसीलिए we are saying these things, these kind of things. And one thing very very important, तो अब अगर हम बात करें कि भाई फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स कौन है, because this thing is very very important in concept. So फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स कौन रहेगा, that is अब्राहम जैकब from 1830 to 1919. So he is known as the father of pediatrics. Why he is known as the father of pediatrics? Because of his contribution to this फील्ड, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दी थी इस फील्ड में. क्योंकि आप सभी को पहले पता होगा कि पहले पीडियाट्रिक्स फील्ड नहीं होती थी, जितने भी बच्चे होते थे वो सारे के सारे मेडिसिन वार्ड्स में ही एडमिट किए जाते थे, है ना. तो फिर क्या है, बच्चों में इम्यूनिटी तो कम होती है. अब बच्चों में इम्यूनिटी कम होगी तो ऑब्वियसली उनके लिए क्या हो गया, वार्ड्स अलग से बनने स्टार्ट हो गए. तो फिर बना पीडियाट्रिक्स. सो फिर हमने पीडियाट्रिक्स के लिए अलग अलग चीज़ें जो हैं, अलग अलग डिजीज़ कंडीशंस, अलग अलग उनके सिम्टम्स, अलग अलग उनकी ट्रीटमेंट को पढ़ना स्टार्ट किया. ठीक है, सो that is why this concept of child health is very very important. So I want to recapitulate this. बच्चे अगर ये आपको एग्जाम में आ रहा है कि write down the concept of child health, तो what you have to write is you have to write the term pediatrics and how it has derived from the Greek words, and then you have to write down the two definitions, and you have to write down the who is the father of pediatrics, as well as what I have explained you, 2-3 lines what I have explained you have to write that. ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना.